So here comes Chemio Singadi around the wicket to right hand, and new batsman Mufi. This time that is the dotted delivery. So 4 balls completed from the bowler, 3 balls completed, 9 balls remaining from the bowler like Chemio Singadi. 7 runs needed. So in the batting combination we can see Mufid as well as Ashwath Kasaragod opener still at the non-strike region. Now Chemio Singadi with the ball number 4 to Mufid, and this time pushing the ball into the square leg region. Clever click from the batsman, just moving on the track and giving a slight touch with the bat. Ball moving into the square leg region, running for the single. Now that single makes scorecard 33. 6 needed from 8 balls. So Chemio Singadi with the ball number 5 to Ashwath Kasaragod. Full delivery this time, clicks and into the answer. Siddiq Bolleri, they are going for the appeal, but umpire says not out. Keeper's mistake, gifting 1 more runs for the batting side. That single makes scorecard 34 runs on the board. So if that was a dotted delivery, there may be something fresher for the batsman. A wicket keeper fails to collect the ball heading the fingertips and moving into the hands of the fielder Siddiq Bolleri. They were going for the appeal. Now the umpire was saying not out in the first call. They are having a slight discussion, the main umpire and the square leg umpire, more than the wicket. The bowling side needed a dotted delivery. Yeah, they are taking their position, and umpire says not out. So 1 more runs added up here. Scorecard is moving to 34 runs on the board. 5 runs needed from remaining 7 balls. So still the match is well balanced here, we can say, because the PAIVALIKE stadium, we can't predict anything. Here comes Chemio Singadi with the final one. The dot ball will make something pressure. Here comes around the wicket to Mufid, looking for the reverse shot. This time dotted delivery. Over number 5 completes. 34 runs on the board. 5 runs needed from 6 balls. Discussion, big discussion going between the fielders, bowlers, captains, who will take responsibility to bowl the final one. So Abdur Rahman BSC Beko left the commentary box thinking that batting side on the match, but this is the cricket. Single over, single delivery can change entire moment. 5 runs needed from 6 balls. Excellent over we can see from Chemio Singadi. Just considered 4 runs. 1 wicket, got a wicket of the batsman like Giri Kumbala. That was the turning point of the particular match. Now 5 needed from 6 balls. So oval ball, we can see 4 members gathered in the bowling mark, and finally it's Salam. Good luck pursuit standing in the bowling mark to bowl the final over. 5 from 6 balls. Fielders are well set in the fielding position. Single dot balls will put something pressure for the batsman. The first 2 deliveries will be crucial. They have to get the dot balls here. The batsmen have to get the singles here. Well set. Fielders are well set to rush to the singles. Team leading under the captaincy of Chemio Singadi. He may be having so many experience facing such a situation in the so many cricket matches. Abdurrahman BSC Bekor is back to commentary box again. 5 runs needed from 6 balls. Here comes Salam. Looking for the reverse shot up in the air into the hands of the fielder. Wicket down there. Ashwath Kasaragod should walk back to the pavilion. This is the cricket. Hey cricket. पिक्चर अभी भी बाकी है भाई. फाइट टू गो, फाइट टू गेट. 12 गेंद में 9 रन की जरूरत है, तब वर्ड भी डाले थे. यहाँ पर जो बहुत खूबसूरत वापस आए, जो सलाम अरीमला गेंदबाज के रूप में आए, जो सलाम अरीमला को जो पिछले हफ्ते में जो उपला में मिले थे, उनके पास बात किया गए थे. मैंने कहा था कि आप लीजेंड है, जो लेग स्पिन में लीजेंड है आप, लेकिन आपको कोई यूज नहीं कर रहे हैं. ये मैंने इसके बाद बात कहे थे. इस मैच के बाद आप पूछिए, इसके बाद बहुत अच्छे लेग स्पिन गेंद फेंकते हैं इन्होंने, और इन्होंने जो इनको अवसर मिले तो बहुत खूबसूरती के साथ गेंदबाजी किए. आप गेंद बचे हैं 5 रन बनाना है, 5 पंजे में पंजा, यहाँ पर 5 में 5 लगाना होगा. बल्लेबाज दोनों नए हैं, एक सुनील है, एक मुफीद है. इस गेंद बहुत बढ़िया, फील्डर मौजूद. सलाम अरीमला यहाँ पर पूरी तरह उछाल आए हैं, जो गए हुए टीम को बिल्कुल खड्डे के अंदर से जो हाथ पकड़कर खींचना चाहते हैं. और कब तक कामयाब होंगे वक्त ही बताएंगे. यह है सलाम अरीमला.
अब स्ट्राइक पर मुफीद है, नो स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज आए हैं नवाब बेको। क्या होगा मैच? और उससे पहले की ओवर चेमी वसंगाड़ी ने बहुत खूबसूरत गेंदबाजी किया गया थे, बहुत अच्छी गेंदबाजी किया गया थे। 4 गेंद में 5 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। यहां पर गेंदबाज हैं सलाम अरीमला, एक जमाने के शहर थे जो गुडले पशोर थे, शेर थे, इन्होंने अभी भी शेर ही हैं, शेर बन गए हैं। आप इनके सामने हैं मुफीद अराउंड द विकेट, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है और बिल्कुल दिमाग की बत्ती जलाकर मुफीद ने खेला गया है। आप नवाब आए हैं, इन्होंने मेंटोस कहते हैं कि क्या खाते हैं ये नहीं जाने। अब 3 में 4 नहीं चाहिए, 3 में 4 चाहिए मैच को जीतने के लिए। बहुत बढ़िया रोमांचक स्थिति भरी हुई मैच है, सब खिलाड़ी बिल्कुल परेशान हैं, बल्लेबाज परेशान हैं, फील्डर्स परेशान हैं। बहुत खूबसूरत मैच के अंत, ऐसे मैच देखने के लिए दर्शक दूर दूर इलाके से आते हैं। यहां पर आउट क्या हो, क्रीज छोड़कर गए तब स्टंप को गिरा दिया। ये बहुत दिमाग के बत्ती जलाए और बत्ती को बुझा दिए। नए खिलाड़ी के रूप में अन्नू आए हैं। अब गेंद कितना बचे हैं? 2 गेंद बचे हैं, 3 की जरूरत है। नवाब मैदान पर मौजूद है, विकेट 6 पतन हुए। चेमी के चेहरे में मुस्कुराओ यहां पर बिल्कुल लगेगी, क्योंकि गए हुए मैच को वापस लेकर आ रही है। और यहां पर गेंदबाज फील्डर को जो सेटअप करते हैं, और इस मैच के जो सीधा प्रसारण दुनिया की कोने कोने में जा रही है, तो बाहर गांव में बहुत कुछ लोग देखता होगा। सलाम के जो पड़ोसी हैं जम्मू भी देखता होगा इस मैच को। जिया पैवलिके बहुत टेंशन में होगा बाहर गांव में। और गेंद में उल्टा बल्ले में खेला गया है, फील्डर के पास गए हैं एक गेंदबाजी के साथ। यहां पर बहुत बढ़िया गलती की है, बहुत बढ़िया गलती की यहां पर फील्डर ने। सलाम की कोई कसूर नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी किया गए थे। फील्डर ने इस गलती को कबूल नहीं कर पाएंगे। इस गलती की परिणाम क्या होगा ये देखना बाकी है, वक्त ही बताएंगे। 1 गेंद बचे हैं, 1 रन की जरूरत है, 2 अंक प्राप्त कर चुके हैं। 2-2 पॉइंट के साथ है, लेकिन इसको खींच लेंगे, देखना बाकी है। नवाब 1-1 पॉइंट है, जी हां 2 पॉइंट है जो जीतने वाले को। अगर जो टाई हुए तो 1-1 अंक बांट लेंगे यहां पर। बहुत बढ़िया मैच, 1 में 1 पूरी तरह 30 तारीख के अंदर भरी हुई खिलाड़ी हैं। 11 खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेटों में देखने को मिलते हैं। कभी कभी जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया मैचों में ज्यादा से ज्यादा जो सर्कल के अंदर भरे होते हैं, सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी बाहर होती है। बहुत बार देख चुका हूं। आप सलाम बिल्कुल लेग स्पिनर की लेजेंड। नवाब बेकुर 2 गेंद में 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, और इस समय पर 2 गेंद में 3 रन बनाना मुश्किल काम है। आप ये बेकुर के खिलाड़ी हैं, जानी बीएससी के खिलाड़ी हैं। जी हाँ, मैं भी खुश हूं। यहां पर मैच अंत हुए। एक्सट्रीम मोरतना के लिए 2 पॉइंट बिल्कुल सारी खिलाड़ी ने दागा, और जो गए हुए मैच थे आना जो लेकर आना कोशिश की है, जो बहुत बढ़िया धन्यवाद देना चाहता हूं। सलाम अरीमला और चम्मी वसंगाड़ी को बढ़िया धन्यवाद देना चाहता हूं। दूर दूर इलाके से दर्शक बहुत कुछ आए इस मैच के आनंद उठाने के लिए। इस दर्शक को बहुत खूबसूरत ट्रीट दिया गया है। काफी परेशानी है, काफी निराश है सलाम अरीमला। यहां पर मैन ऑफ द मैच की तरफ जाना होगा। मैन ऑफ द मैच की तरफ आप देखने के लिए
कुछ समय लगेगी। അലി മുസൂടി ഇവിടെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിൽ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് മുന്ന ബപ്പായി തൊട്ടി അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ കളിക്കാരനായിട്ട്, ചിലപ്പോൾ കാണികളായിട്ട്, കാണിയുടെ ഭാഗത്ത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മുന്ന വരിക. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വരിക. അശ്വത് കാസർഗോഡ് ബാറ്റിംഗിൽ കൂടി 14 റൺസ്, ബൗളിംഗിൽ വെറും 7 റൺസ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തു. ആ 7-ൽ 4 വൈഡായിരുന്നു. ഇവിടെ മുന്ന ബപ്പായി തൊട്ടി താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അണ്ടറാം വേൾഡ് നൽകുന്ന സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് രണ്ട് ലിറ്റർ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് മറ്റൊരു പുരസ്കാരം കൂടി നൽകപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 ചടങ്ങുകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, രണ്ടും തികച്ചും സർപ്രൈസ് ആണ്. ഇവിടെ റിയാസ് കുഞ്ചത്തൂർ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരണം, റിയാസ് ഒസങ്കാടി ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരണം. അതേപോലെ മറ്റൊരു വ്യക്തി കാസർഗോഡ് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ കൊഗ്ഗു കുമ്പള, അദ്ദേഹത്തെയും ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൽ 25 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള, അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൽ 25 വർഷമായി അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാവട്ടെ നേരിട്ടാവട്ടെ, അണ്ടറാം കളിക്കാർ 25 വർഷത്തിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളെയും പരിചരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്ലബുകളിലൊന്നായ ബ്രദേഴ്സ് ഒസങ്കാരിയുടെ കളിക്കാരൻ കൂടിയായ, കമന്റേറ്റർ കൂടിയായ, വിക്കറ്റ് കീപ്പറായ റിയാസ് ഒസങ്കാരി, അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. റിയാസ് കുഞ്ചത്തൂർ, അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ലിജൻഡ്, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഷോൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റിയാസ് ഒസങ്കടി ആദരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് അണ്ടറാം ഗ്രൂപ്പിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന് ഷാൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത് അമാൻ കുമ്പളയാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ജല്ലു ഫിറോസ്, ലെജൻഡ് ഓഫ് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ്, വിദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഏത് മത്സരം നടന്നാലും അപ്ഡേറ്റിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ലൈവിൽ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഈ പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ ആദരവ് ചടങ്ങിൽ 2 ടീമിന്റെയും സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം. ഇവിടെ ഷാൾ അണിയിക്കേണ്ടത് കാസർഗോഡ് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ കൊഗു കുമ്പള അദ്ദേഹമാണ്. എവിടെ ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ പുരസ്കാരം നൽകേണ്ടത് റിയാസ് കുഞ്ചത്തൂറാണ്. അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൽ ലിജൻഡാണ്. ഇവിടെ മറ്റൊരു വ്യക്തി കൂടി ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. റിയാസ് ഗോറിയുടെ സാന്നിധ്യം തികച്ചും ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കർണാടകയിൽ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായത് കാരണം ഇവിടെ ടീമിനൊപ്പവുമില്ല, അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിലുമില്ല. റിയാസ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ കൊഗ്ഗു കുമ്പള അദ്ദേഹത്തിന് ഷാൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് വേൾഡ് അണ്ടറാം ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെയും അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൽ കൂടിയും ഒരുപാട് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന് സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിയിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പുരസ്കാരം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റിയാസ് കുഞ്ചത്തൂർ, വേൾഡ് അണ്ടറാം ഗ്രൂപ്പ് നൽകുന്ന അമാൻ കുമ്പള, ജല്ലു, അതേപോലെ ഫിറോസ്,
മഞ്ചേശ്വരം സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പുരസ്കാരവും ഷാളും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കണ്ണീരോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. കാരണം ഈ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പറക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഈ സീസൺ ഈ ടൂർണമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സീസണിലെ അവസാന ടൂർണമെന്റ് കൂടിയാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ഈയിടെ അവസാന സീസണിൽ കടന്നു വരികയും അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായ ഒരുപാട് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർക്ക് നേരെ റോക്കറ്റ് കണക്കെ ചിറിയുന്ന പന്തുകൾ എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും ആദരവും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കളിക്കാരൻ ആപ്പി കുഞ്ചത്തൂർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനമാണ്. 17ാമത്തെ ജന്മദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം വന്ന് കേക്ക് മുറിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു അപൂർവ നിമിഷങ്ങളിൽ അപൂർവമാണ്. ഇവിടെ ആപ്പി വരിക. അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ. കാരണം എന്റെ കരിയറിന് 35 വർഷമായി. എന്റെ കരിയറിൽ ഇത്രയും നല്ല ഒരു ബോളറെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാർക്കെതിരെ പന്തെറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവിറക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റവും അതേപോലെ മഞ്ജു പൈവളിക്ക അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടേക്ക്. മഞ്ജു പൈവളിക്ക ആപ്പി കുഞ്ചത്തൂറിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ജന്മദിനാശംസകൾ നേരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നേരിട്ട് സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മഞ്ജു പൈവളിക്ക നല്ലൊരു കൈയടി നൽകുക. അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവ നിമിഷമാണ് ഇവിടെ ആപ്പിക്ക് ഇവിടെ മഞ്ജുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തികച്ചു ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് സീസൺ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളമായിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും നല്ല ഒന്ന് ക്യാമറയിൽ കാണും പ്ലീസ്. ഈ ഒന്ന് ക്യാപ്പ് ഇട്ട് 1 വർഷത്തോളമായി എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അണ്ടറാമിന്റെ തലതൊട്ടപ്പന്മാരായ റിയാസ് അടക്കമുള്ള ഷമി അടക്കമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൺസ് വേട്ടക്കാർക്കെതിരെ താങ്കൾ പന്തെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ താങ്കളുടെ കൈ വിറച്ചിട്ടില്ല, മനസ്സ് വിറച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇവിടെ. താങ്കൾക്ക് എല്ലാവരുടെ പേരിലും ജന്മദിനാശംസകൾ നൽകുകയാണ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആത്മസുഹൃത്ത് മഞ്ജുവിനെ നൽകിക്കൊണ്ട് പരിപാടിക്ക് ശേഷം മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് ഒരു വശത്ത് KFC കുമ്പള, 2 ടീമുകൾ തമ്മിൽ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജന്മദിന ആഘോഷം കഴിഞ്ഞു. കാണികൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടു പോവുക. അടുത്ത മത്സരം KFC Strikers കുമ്പള അണ്ടറാം ഗ്ലാഡിയേറ്റേഴ്സ് തമ്മിലായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ കൂടി ന്യൂ സ്റ്റാറിന്റെ യുവതാരം അപ്പിക്ക് ജന്മദിന ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ മത്സരം തുടങ്ങാം. സ്കോറർ Okay, we are ready. KFC Kumbla Strikers takes on Andram Gladiators. After spinning the coin, captain from side of Andram Gladiators won the toss and they elected to field. First fielders are well set on the fielding position. In the opening pair, we can find the new batsman Jabir Manjeshwa, Pradeep Kumbala, both the right-handed batsmen gathered for KFC Strikers Kumbala. In the bowling mark, regular opening bowler Riyaz Kunjatur. So here comes the very first ball. Rolling one, this time big appeal, whether it was a caught behind. So umpire is moving into the square leg region.
So Latif as well as Chandra MC, that is the umpiring panel for this particular match. They are having a slight discussion. That was a confidential appeal we can see from Sadiq Puchatabail as well as Riaz Kunjatu for the court behind. They are taking their position and says not out. So okay, anyway, that was Dr. Delivery. Good start from Riaz Kunjatu. Excellent collection we can see from the wicket keeper Sadiq Puchatabail, standing very closer to the sticks and collects and goes for the appeal. And umpire says there was no connection between bat and ball. So Riaz Kunjatu started the over perfectly. So this is the 8th match of the particular night number 3 in the SPL 2018. Riaz Kunjatu with the ball number 2nd. Rolling delivery nicely ball this time. Again into the keeper's region. 2 consecutive dot balls to start the particular innings. So Andram Gladiators playing their final match here of the group stages. So Riaz Kunjatu ready to deliver over the wicket to Jabir again. Pitching delivery, look at the big shot ball moving in his gully region, and it turns and pushing the fielder and moving outside the 30 circle. Well backup done by Azru Bichu Boys, quality fielder from Andram Gladiators. So that is the first single. Jabi Manjeshwar off the mark after facing 3 balls. 2 brilliant deliveries we can see from Riaz Kunjatu. Finally Jabi getting off the mark with a beautiful single and staying in non-strike region. Now at the strike region we can see Pradeep Kumbala, the captain from side of KFC Strikers, ready to face the captain from side of Andram Gladiators. Here comes Riaz. Nicely played, defends the ball towards the wideish mid-off region and running for single. So with that fancy stroke, Pradeep Kumbala is off the mark. So 2 runs from 4 balls. That is a good start we can see from the bowling side. Andram Gladiators. Riaz Kunjatu is bowling the power play over here. Here comes the ball number 5. Rolling one. This time bills are lightning. No need for any appeal. Umpire says that was the clean bowled. Bowler, wicket keeper, fielder, everyone celebrates the wicket of Jabi, who was in good form in the previous match for KFC Strikers. Kumbala really failing in front of Riaz Kunjatu. 5 balls completed, 2 for the loss of 1 wicket. So after losing the wicket of Jabi Manjeshwar, here we can find the icon player Basit Mangalore gathered along with Pradeep Kumbala facing Riaz Kunjatu. Final one. Pitching delivery nicely played, drives into the covers region as Rubichu Boys was not able to collect. Meanwhile Shamsid backups the ball and Basit off the mark. Over number 1 comfortably completed, just 3 runs considered by the master of Andram cricket Riaz Kunjatu, and picked up the wicket of Jabir Manjeshwar. So this is a match playing here between Andram Gladiators. That means they are playing the 6th match of particular group stages. They got just 6 points on the points table. 3 victory, 2 defeat we can find in the points table of Andram Gladiators. On the opposite side we have KFC Strikers Kumbala. They are playing the 5th match. So after this match they are having one more match in the particular group stage. That will be against Extreme Hunters Mortana. Already they got 6 points on the points table. So if KFC Strikers get a victory here, they will be in the top in the pool A. Just 4 matches including this match remaining in the pool A. After this particular match we are going to have the match between Amigos United, BFC Meshwa, Munna Fighters, CSC PAIVALIKE, KFC Kumbala, Extreme Hunters Mortana. That will be the story of the Group A in the particular Swiss Premier League 2018. Over number 1 completed, 2nd over in progress. Here comes the new bowler, left-hand bowler Shamsid PAIVALIKE. The local hero of CSC comes in the middle to bowl the 2nd over, bowling around the wicket. And Basit just pushing the ball into the leg side region. Tapi Bekor makes no mistake, standing inside the 30-yard circle. So this is the 2nd over of power play. We can see batting side already scored just
4 runs from 7 balls. Pradeep Kumbala, who is known as AB de Villiers in Underarm cricket, who are having the ability to play entire ground 360 degree. Here comes Shamsir. Looking for the reverse shot up in the area. The Singari underneath a bad ball, pushing the field. Excellent collection. Azru Bichu boys in the deep, not allowing the batsman to cross with a couple of runs. So we can see something injury for the batsman Pradeep Kumbala. That will make some trouble for KFC Strikers. Kumbala is the key player, coming as the opener, starting as the wicket keeper. So 2 consecutive singles considered by the bowler Shamsid PAIVALIKE. So Underarm Gladiators entering into the final game in the absence of Riaz Gori. That is the big absence we can see. So Shamsid PAIVALIKE bowled 2 deliveries here. We can find 2 singles. So Pradeep Kumbala is fine standing in the non-strike region and is relaxing there. So here comes the bowl number 3, ready to deliver around the wicket to the right-hander batsman Basita. So Shamsid to Basita. Rolling well, looks at the big shot. This time ball moving into the hands of Tapi Bekor, and he fumbles there. That makes batsman to cross for the single comfortably. So kick single taken to that single makes how many runs on the board? 6 runs on the board. Really good piece of bowling performance. 3 consecutive singles considered by the bowler Shamsid PAIVALIKE. It's not an easy job for the bowlers to bowl the power play overs in the cricket games. Here comes Shamsid with the ball number 4. Sweep shot. This time into the hands of the fielder. Pradeep Kumbala should walk back to the pavilion. Wicket number 2 down. He was not aware of the fielder. They are standing in the inside 30-yard circle. Excellent collection from the fielder. That makes end of another wicket. Wicket number 2 down. 5 balls completed. 6 for the loss of 2 wickets. 1 more to go. Five balls completed, 6 runs for the loss of 2 wickets. So okay, 2 more to go. So sorry for the big mistake. 4 balls completed from Shamsid PAIVALIKE. 2 more deliveries yet to come. Once again, sorry. Here comes Shamsid PAIVALIKE ready to deliver the 5th one around the wicket. Sweeps the ball, this time ball moving into the square leg region for the left-hander batsman. Salih Adka comes and opens his innings. Now 5 balls completed, the scorecard is moving to 7 runs on the board. Losing the wicket of Pradeep Kumbala as well as Jabi Manjeshwar. Both the openers are sitting back in the dugout watching rest of the match. We can find the batting combination, Basit Manglo, Salih Adka left-right combination gathered for the team like KFC Strikers. Kumbala, Shamsid PAIVALIKE with the final one around the wicket. Look for the extra shot. This time ball moving into the wideish long on region. RBBC Road. He never makes a mistake in the fielding position. Now over number 2 completed from Underarm Gladiator. Another good over from the bowling side. Scorecard is 8 runs with for the loss of 2 wickets. 8 for the loss of 2 wickets. That is the present condition of KFC Strikers Kumbala. So all the teams, please note, this is the 8th match going on here of the particular day. After this match, we are going to have Amigos United takes on BFC Manjeshwa. Munna Fighters PAIVALIKE will play against CSC PAIVALIKE. And the final match in the Group A will be KFC Strikers Extreme Hunters Mortana. We have to finish 11 matches today as per schedule. So this day will show us who will qualify, who will eliminate from this particular Pool A. We are going to enjoy 11 more matches in the upcoming nights and day here in the PAIVALIKE Stadium to know who will qualify and eliminate from Pool B. And the final day will tell us the knockout matches, will show us the knockout matches here. 8 knockout matches, and finally we will get the big answer for the champions title. Who will be the captain to lift the Champions Trophy here, the Swiz Trophy 2018 here from PAIVALIKE Stadium.
2 overs completed, 8 for the loss of 2 wickets. That is the present batting condition of KFC Strikers Kumbala. After losing the toss, Captain Pradeep Kumbala coming along with Jabi Manjesha. Both the openers are failing in front of the bowlers. Excellent bowling figure we can see from Riyaz, new star Kunjatur Shamsi, the left-hand bowler from PAIVALIKE. Bowled 2 over, considered 8 runs, 3 from the first over, 5 from the second over, got 2 wickets in 2 overs. Here comes the bowler number 3, Tapi Bekor. Ready to deliver around the wicket to the right-handed batsman Basif. Rolling delivery, that was a quicker delivery coming from the bowler, and umpire turns and indicates that was the wide delivery. Extra more added up here. New bowler starting with the wrong line. So we can see Basit, the icon player from KFC Strikers Kumbala, is playing at number 3 as the one-down batsman. He have to show some talent, some good performance for the team. The captain may be hoping so much from the batsman like Basit, who is playing for Annam in the Karnataka side this time. He fails against Tapi Bekor. Good line from the bowler soon after delivering the wide delivery towards the leg side region. Tapi Bekor is trying to bowl the good line here, and that is considered as a dotted delivery. Third over in progress of the particular match, match number 8 here. Once again, I welcome all the cricket lovers who are gathered here in the PAIVALIKE Stadium. You are witnessing Swiss Premier League 2018. Here comes Tapi with the ball number 2. Looks at that cross shot, thick edge ball moving into the short third man position. He was trying to hit towards the square leg region, but connection was not perfect. Ball hitting the top edge of the bat and moving into the third man position. Anyway, batsman is running for the single, and that single helps team to get a double digit 10 runs on the board. So 2 balls completed from the bowler Tapi Bekor. Started with a wide delivery. Soon after delivering the wide ball, he is bowling the good line here against the batsman. Here comes the ball number 3 around the wicket to the left-handed batsman Sali. And this time into the bars, big appeal going on. Umpire just moving from his position. That means there was nothing for that appeal. He denies the appeal. Batsman staying safe. 3 balls completed. Excellent bowling performance we can see from Andram Gladiators team, leading under the captaincy of Riyaz Kunjatur, man standing at the long on region for that left-handed batsman. Here comes Sapi with the ball number 4. Looks for the cut shot, nicely played this time into the hands of Mustafa CE. Makes something mistake. Anyway, nice backup done by the fielder after a little fumble. That makes batsman to settle with a single. That single makes 11 runs on the board. Excellent bowling performance. 4 balls delivered here. Just consider 3 runs, 1 in the form of wides, 2 singles taken by the batsman. It shows batsmen are really struggling in front of the bowlers. Still 2 more deliveries yet to come from the bowler Tapi Bekor. Here comes the ball number 5. Rolling one, looks like a big shot. Basit is just trying to charge the bowler, but they are not getting the time to swing the bat. He was trying for the across shot, but the quicker delivery makes something problem for the batsman like Basit Mangalore. Now scorecard is moving to dozen on the board, 12. Third over in progress. 2 power play overs are completed here. 1 over from Tapi Bekor going to complete here. Just 12 runs on the board for the loss of 2 wickets. That shows the team like KFC Strikers is struggling in front of the bowlers. Here comes the final one. Rolling one, nicely played this time. Ari Surambail stops the ball. Meanwhile, batsman is running for the single. Mustafa CSC PAIVALIKE collects comfortably, throws into the non-strike region. Excellent work finally done by the fielding side. Over number 3 comes to an end. Scorecard is 13 runs for the loss of 2 wickets. So 3 overs completed. Scorecard is 13 runs for the loss of 2 wickets. Here Andram Gladiators entered into the final game of the group stage in the absence of Riyaz Gori.
That is a big miss we can see. But here Riaz Kunjatur, the experienced man from Kerala, just filling the gap of Riaz Gori by bringing up the quality bowlers at the beginning of the innings. We can see Riaz Kunjatur bowled the very first over, considered 3 runs. Shamsid PAIVALIKE bowled second over, considered 5 runs. In the third over, we can see Tapi Beku bowled perfectly. Here Riaz Kunjatur bowling the fourth over, started with a brilliant delivery. Sali Adka just flicks the ball and they are ready for second. Sadiq Puchatabail throws, bowler makes a mistake. That was the one bounce throw from the wicket keeper. That makes something problem for Riaz Kunjatur to collect. Meanwhile, batsman is very much safe. Good running between the wicket. 2 more runs added, that 2 makes Kokada 15 runs on the board. So now the batting side is playing on the fourth over. That means they have to convert each and every single into the couple boundaries. They have to get maximum. They have to get extras to put a decent total. 40 plus runs much needed here. Batting first. Here comes Riaz Kunjatur with the ball number 2. Pitching well, look at the big shot this time. Big appeal from the bowler always. When the ball hitting the pads of the batsman, Riaz will go for the confident appeal. It means he's bowling wicket to wicket delivery. But umpire says batsman was away from the stick. Now 2 balls completed here. 16 runs on the board. So left-right combination gathered here. It means for each and every rotation on the strike, captain how to set the field. And now Aris Surambail is pushing back into the deep from 30-yard circle. Riaz Kunjatur ready to deliver the third one to Basit. Rolling one, completely missed by the batsman. Excellent work we can see from the bowler Riaz Kunjatur. Really, it shows the quality. They had a key player, Riaz Gori, in their team, but he is missing in the present match. Riaz Kunjatur is just filling the gap, filling the absence of Riaz Gori and doing the perfect job. Here comes Riaz. Rolling one, looking for the reverse shot, ball moving into the deep. Riaz Singhadi behind the ball. Excellent stop done by the fielder. They are running for the couple of runs. Meanwhile, your bowler is indicating something shorter. Umpire is just checking where the batsman was crossed the crease. That is a couple of runs. Four balls completed. 18 runs on the board. Excellent bowling figure. We can see they are really attacking the batsman now. Pradeep Kumbhala and Jabi Manjesh sitting back in the dugout, just watching the match of KFC Strikers. Kumbhala, Sali Adka, the left-handed star, having the ability to hit the big shots anytime the cricket match. Let's wait and see, can he charge against the upcoming bowlers? Here comes Riaz again. Rolling one, clean ball. Bells are lightning. That means end of icon player's wicket. Riaz Kunjatur celebrating. He gets a second here. Team losing the third one. Riaz Kunjatur gets a second wicket. 18 for So after completing the fourth over, Riaz Kunjatur bringing the favorite bowler Annu Manimunda in the middle to bowl the fifth over, taking the guard right time around the wicket to Dinakar Shetty. Nicely drive this time into the middle of region, chance for the run out, and umpire says not out. Yes, it is. Dinakar Shetty should walk back to the pavilion. That was excellent collection from the fielder at the mid of region. Azuru Bichu boys just sending the ball, throwing the ball into the bowler's region. Bowler breaks the stump and batsman Dinakar Shetty should walk back to the pavilion. That was a clear run out we can see from the bowler Annu Manimunda. Good start we can see from the fifth bowler. Just 19 runs for the loss of 4 wickets. Really collapse we can see in the batting side. KFC Strikers, Kumbhala struggling in front of the bowlers. So new batsman Yusuf Musori at number 6. Annu Manimunda ready to deliver the second one around the wicket to Sali.
Pitching delivery this time into the hands of the bowler. Confusion for the batsman. Salih was thinking ball was going away from the wide line, but that was going inside the line. Good ball from Annu Manimunda. Here comes the bowl number 3 around the wicket. Lucy, floppy delivery coming from the bowler. Lollipop. Salih fails again here. 3 consecutive dot balls here from the new bowler. This is the 5th over of the inning. That means batting side have to charge the bowlers. They are lessen the number of scores. 19 runs, 5th over in progress. Here comes Annu Manimunda. This time again a good one. Good line. What Salih is doing here? Just standing as a spectator with the bat. 4 balls completed. That is a good line. That was the call from Riyaz Kunjatur. He is very much happy. Here comes ball number 5. Rolling one, nicely delivered this time, ball moving into the hands of the fielder. Riyaz Singari makes no mistake. Meanwhile, batsman Salih crossing for the single, and that single makes Coca 20 runs on the board. 5 balls completed, 1 run conceded. Just 1 run conceded. Here comes Annu Manimunda ready to deliver the final one to Yusuf Musodi. So first delivery, we seen the run out of Dinakar Shetty. After that 3 consecutive dot balls and finally single. Here comes the final one. Oh, Yusuf is dancing on the track. Meanwhile, umpire says that was illegal. Over number comfortably completed for the fielding side. Excellent job, Annu Manimunda. Just 1 run considered from 6 balls. Top class bowling performance. Here 5 overs completed. Scorecard is 20 runs for the loss of 4 wickets. So match is going in the right way of Underarm Gladiators. I was mentioning at the beginning of the particular match, Underarm Gladiators entering into the ground after getting the toss. In the absence of Riyaz Gori, the key player, trunk card we can call such a player from Mangalore, is not playing in the particular match against KFC Strikers. Salih Adka striking very field underneath it and pushing the fielder, and that is bye-bye one from Salih Adka. Mighty blow towards the leg side region. Fielder was trying, just diving upwards. Scorecard is jumping to 26 runs on the board. Salih had 3 dot balls in the previous over. That means he have to charge the bowlers. They have to get the decent total. This is the final match for Underarm Gladiators. KFC Strikers having 1 more matches in the particular group stages. Here comes Harish Sorambail again. Pitching one. This time ball moving towards the outside region. Excellent change in the line we can see from Harish Sorambail. He was targeting the leg stick. That was the first delivery. We've seen the beautiful sixer. And Harish Sorambail bowling towards the outside region. Here comes the ball number 3. This time Salih sweeps, ball moving into the leg side region, running for single, and Riyaz Singari makes no mistake here. Keeper makes no mistake. Meanwhile, batsman completing couple of runs. So 8 runs considered by the new bowler Harish Sorambail. Match was going in the right way of Underarm Gladiators. Now the match is pulling back by the team like KFC Strikers. Salih Adka, I was mentioning, he is attacking player but got some time to charge the bowler. Now final over in progress here. 8 runs already got from 3 balls. 3 more deliveries yet to come. Here comes Harish Sorambail, left-hand bowler around the wicket. Lucy this time big appeal, but umpire says batsman was away from the leg stick. Salih Adka is calling for the second, and that is the wicket. Yusuf Musodi is leaving the crease. I think Salih Adka should walk back to the pavilion. So finally the left-hand batsman walking back to the pavilion. 1 runs added up here. That 1 makes Coca 29. 29 for the loss of 5 wickets.
So new batsman we can see Hassan Perla facing Ari Surambail. Still two more deliveries yet to come from Surambail bowler. This time ball moving outside the leg stick. That is a wide indication. Direct throw from the wicket keeper. An umpire widens. That is the extra from the bowler. 1 runs added up in the form of wide. Still two more deliveries yet to come. Direct throw we seen from the wicket keeper, but Yusuf Musodi was very much safe into the non-strike region now. Scorecard is moving to 30 runs on the board. That is a big over we can see from Ari Surambail. Expensive over so far in the innings. All the bowlers done their job perfectly. Here comes Surambail Arish with the ball number 5. Rolling deliver this time. Good line. That is a leg spin delivery. Ball turning inside the wide line. Hassan Perla was confused. He was thinking ball was going away from the wide line. This time Ari Surambail, the leg spin bowler, makes perfectly to end the innings. It's Lucy. Wow, look at the big shot. Fielder Abi BC Road, and he never misses catch in the Antram cricket. Wicket down. Innings completed. Scorecard remains on 30 runs for the loss of 6 wickets. So 31 will be the victory target for Antram Gladiators. Let's wait and see how well they can bat in the absence of Riaz Gori, who will open. So many questions are remaining. Let's wait for the second inning soon. I request the players on side of Amigos United, BFC Manjesha, please finish your sign-up process immediately. അടുത്ത മത്സരിക്കേണ്ട Amigos United, BFC Manjeshwar ഇരു ടീമിന്റെ എല്ലാ കളിക്കാരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുക. For upcoming innings we have Abdurrahman BSC Beko, Team Antram Gladiators have to chase 31 runs from limited 6 over. धन्यवाद मिस्टर नौशाद बुराक। अब तक आंखों की हाल सुना रही थी अंग्रेजी कमेंटेटर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस बीच में इस मैच है 8वें मैच है आज के दिन की। अगली मैच के जो साइन अप यहां पर शुरुआत हो चुके हैं। अमेगोस यूनाइटेड, बीएफसी मंजेश्वर, दोनों टीम जल्द से जल्द आना चाहिए जो साइन अप के लिए। और इसी तरह तहसीर को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। स्कोरिंग पैनल पे जो प्रमुख हैं अमीर पैवलिका और तहसीर पैवलिका, दोनों बहुत खूबसूरत जो स्कोरर हैं। और इस मैच के विशेषता है कि एक पहली इनिंग्स में जो 31 रन के लक्ष्य को कड़े किए हैं। 31 इज द विक्ट्री टारगेट। 36 गेंद में बनाना है। हरीश सुरम्बैल आए हैं आरंभिक बल्लेबाज के रूप में। दूसरे चोर से शमशीद पैवलिका। शमशीद बहुत खूबसूरत ऑलराउंडर हैं और इसी तरह हरीश भी ऑलराउंडर हैं। इन दोनों को भेजा गया है। और रियाज गोरी के बिना खेलते हुए जो बहुत अच्छे खिलाड़ी जो दक्षिण कन्नड़ा के रियाज गोरी थे अब तक, और इन्होंने जो कर्नाटक में बहुत बढ़िया टूर्नामेंट खेलने के लिए यहां से जो निकल गई हैं। अब यूसुफ मुसोडी गेंदबाज के रूप में तैयार हुए हैं। 36 गेंद में 31 रन की जरूरत है। और आखिरी इनिंग्स के सबसे बढ़िया विशेषता है कि जो अन्नू मणिमुंडा ने गेंदबाजी की है, सफल गेंदबाजी की है। एक ओवर में 1 रन दिए हैं इन्होंने। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी किया गया है। जी हां, हम तैयार हैं।
यूसुफ मुसोड़ी गेंदबाज के रूप में तैयार हो चुके हैं। प्रदीप कुंबला जो फील्डिंग में फील्डर को खड़े करते हैं। बैट्समैन स्ट्राइक पर हरीश, नो स्टेकन पर शमशीद, गेंदबाज है यूसुफ मुसोड़ी। पहली गेंद अराउंड द विकेट और इस गेंद में खेला गया है मिड विकेट इलाके पर, फील्डर मौजूद थी, बहुत अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी अच्छी किए थे लेकिन अंपायर ने जो अपील को इनकार किया गया। ये तो यूसुफ के जो यहाँ पर जो यूसुफ को देखते हुए हंसी आ रहे, क्योंकि जो मैदान पर बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, इनको टाइम पास खिलाड़ी है, बहुत अच्छे टाइम पास खिलाड़ी है। जो मनंगुजी मैदान में जो कोबरा डांस इन्होंने इनसे जो देखे थे हम सब, आप यहाँ पर कोबरा डांस किए तो यहाँ पर दुनिया की कोने कोने दिखेंगी। ये विशेषता है यहाँ की, क्योंकि यूट्यूब में जो सीधा प्रसारण दे रही है, दुनिया की कोने कोने में बैठकर जो हर मैच के जो सीधा प्रसारण देखता होगा बाहर गांव में, और भारत में भी जो भारत के कोने कोने में भी बैठकर देखता होगा। जो कासरगोड के जो अंडरआर्म प्रेमी सब भरे हुए हैं भारत के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में भरे हुए। अब अगली गेंद यूसुफ मुसोड़ी अराउंड द विकेट और शमशीद के लिए शमशीद ने कट कर दिया गया है गेंद को। जो तैडमैन इलाके पर गेंद गई, वहां पर फील्डर थे अलिया का, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मध्य से रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन। 2 गेंद में 2 रन बना लिए हैं। एक अलिया का गेंदबाजी कर रही है, दूसरे अलिया का फील्डर के रूप में। अब अगली गेंद हरीश सुराबाइल के लिए अराउंड द विकेट गेंदबाजी करना चाहते हैं यूसुफ, सफल गेंदबाज है, एमपीएल में भी बहुत अच्छे गेंदबाजी किया गए थे। अगली गेंद और इस गेंद को स्वीप किया गया है स्क्वायर लेग इलाके पर, फील्डर मौजूद है, अलिया के तरफ गए, 1 रन और इस 1 रन के मध्य से रन संख्या कुल मिलाकर 3 गेंद में से 3 रन। बहुत अच्छे गेंदबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ी, यूसुफ, दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे बल्लेबाजी करते हुए मौजूद हैं। बहुत अच्छी क्रिकेट, पहली जो पारी में 30 रन सबसे कम रन बनाए हैं यहाँ पर। अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है यूसुफ शमशीद, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और इस गेंद में खड़े खड़े खेलना चाहते थे, कोई कदमों के इस्तेमाल नहीं किए, पराजित हुए। जो विकेट कीपर अंडरआर्म के डिविलियर्स हैं, इन्होंने खड़े हैं विकेट कीपर के रूप में। बहुत खूबसूरत खिलाड़ी है प्रदीप कुंबला, इन्होंने कोई गलती नहीं की, बहुत खूबसूरत गेंद थे, 4 गेंद में 3 रन। और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, गले इलाके पर गेंद जा रही है, वहां पर फील्डर को रखा गए थे 4 नंबर के, इन्होंने फील्डर के रूप में आए, तेजी के साथ उड़ाए, तब तक 1 ही रन और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 5 गेंद में से 4 रन। अब अगली गेंद यूसुफ, बहुत अच्छे खिलाड़ी बने हुए हैं प्रदीप कुंबला के टीम में, केएफसी में मोइदीन अरे बोले बदरू इतनी बटन टीम ने पहुंचेगा। और इस गेंद बहुत खूबसूरत ही खेल खिलाड़ियों के इस्तेमाल की है, लॉन्ग ऑफ इलाके पर खेला गया है, वहां पर फील्डर मौजूद थी, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाए, तब तक ओवर के समाप्त हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत ओवर, 1 ओवर कोई मेडन नहीं, 5 रन और कोई विकेट नहीं। अब दूसरी ओवर के रूप में गेंदबाजी के लिए आया हुआ है चिमी जूनियर, यानी जूनियर चिमी, शमीर नाम के चिमी है, दूसरी ओवर के रूप में गेंदबाजी के लिए आए हैं। और इनके सामने है हरीश सुराबाइल, 5 रन पहली ओवर की समाप्ति पर। दूसरी ओवर के पहली गेंद लेकर तैयार है चिमी ओसंगाड़ी, यानी चिमी जूनियर ओसंगाड़ी, इनके सामने है हरीश सुराबाइल, पहली गेंद फेंकना चाहता है दूर वाले इलाके से अराउंड द विकेट। और इस गेंद को खेला गया है बिल्कुल शॉर्ट लेग इलाके पर, गेंद के पीछे अलिया का, और दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, 2 रन पूरा किया गया है। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, शमशीद और हरीश सुराबाइल के बीच में इस दौड़बाज हुए, बहुत खूबसूरत लगे। 2 रन यहाँ पर, बढ़िया शॉट नहीं लगा है, कोई ताकत नहीं थी इस शॉट में, आत्मविश्वास थे जो बल्ले पर लेकर आए हैं गेंद को, और फाइन लेग इलाके पर खेला गया था। अब अगली गेंद चिमी जूनियर, इनके सामने है हरीश अराउंड द विकेट। हरीश इस गेंद को स्ट्राइक ड्राइव किया है, कोई जगह बनाने की मौका नहीं दिए, गेंद उतनी तेज थे, रफ्तार थे,
और गति बहुत अच्छे थे। अब अगली गेंद सेमी जूनियर, 2 गेंद में 2 रन खर्च किया गया है, रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन। अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं और इस गेंद फाइन लेग पर, और एक बार यहां पर खतरा हो सकती थी, बाल बाल बच गई। बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत अच्छे गेंद फेंका जा रही है। पहली गेंद में 2 रन और वापस आए 2 गेंद में कोई रन नहीं। पहली 3 गेंद में 2 रन, रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन। अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है सेमी जूनियर, इनके सामने खड़े हैं हरीशुरम बायल, और हरीशुरम बायल बहुत खूबसूरत शॉट लॉन्ग ऑफ इलाके पर जगह बनाई, वहां पर आसन पैर लाते इन्होंने गेंद के ऊपर तेजी के साथ आए, उठाए तो रुके तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन। पहली ओवर में 5 रन थी, इस 4 गेंद में 3 रन। अब अगली गेंद सेमी जूनियर, इनके सामने है शमशीद पैवलिका, बहुत अच्छे युवा खिलाड़ी हैं जो इनके होम ग्राउंड भी हैं, और इनके सामने हैं सेमी जूनियर, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। शमशीद के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं, शमशीद इस गेंद को चकमा ये बहुत खूबसूरत गेंद, बहुत अच्छे गेंद। 5 गेंद में 3 रन खर्च किया गया है। शमशीद पराजित होते हुए, हरीश पराजित होते हुए, बहुत खूबसूरत मैच होंगे मेरे ख्याल में। अब तक सिर्फ 8 रन, और भी 23 रन की जरूरत है। इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ इलाके पर, फील्डर मौजूद थे शमसू का लतूर, इनके हाथ पर जाकर रुके, तब तक ओवर की समाप्ति, बहुत खूबसूरत ओवर की समाप्ति की है। 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 4 रन और कोई विकेट नहीं। नाइन विदाउट लॉस। और नए गेंदबाज के रूप में जाबी मंजीश्वर को लाया गया है, और इनके सामने है शमशीद पैवलिका, हरीश सुरमबैल भी मौजूद है। पहली 12 गेंद में 9 रन बनाए यहाँ पर, अब 22 रन की जरूरत है, जो 24 गेंद बचे हैं। गेंद से 2 रन कम बनाना है वहां पर। 24 गेंद में 22 रन। जाबिर मंजेश्वर तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 31 रन के लक्ष्य, छोटे से लक्ष्य यहां पर पीछा करते हुए बहुत खूबसूरत गेंदबाजी किया गए थे पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में भी गेंदबाजों ने बहुत अच्छी चमत्कार गेंदबाजी करते हुए, केएफसी की भी बहुत अच्छी गेंदबाजी जा रही है। अब अगली गेंद इनके सामने है शमशीद पैवलिका, शमशीद के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं जाबिर मंजेश्वर। पहली गेंद अराउंड विकेट, ओ बढ़िया गेंद विकेट कीपर के तरफ। जाबिर भी बहुत अच्छे शुरुआती देना चाहते हैं। 13 गेंद में सिर्फ 9 रन। अब 23 गेंद बचे हैं, 22 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। जाबिर अगली गेंद लेकर तैयार है, दूर वाले इलाके से रेड आर्म अराउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए शमशीद के लिए। ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया यहां पर बहुत खूबसूरत गेंद। विकेट कीपर को भी बहुत बढ़िया तारीफ करना होगा। रफ्तार इतनी ज्यादा है लेकिन भी इनके हाथ से फिसल नहीं जाती है, ये बहुत बढ़िया है। सालों से जो अंडरआर्म क्रिकेट खेल रही है, जो विकेट कीपर के रूप में इन्होंने खड़े होती है। पहली बहुत बढ़िया जमाने में जो केएफसी कुंबला के लिए खेल रहे थे, अभी 2 साल में जो न्यू स्टार कुंजतुर के लिए खेला जा रही है, डिविलियर्स ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट। अब अगली गेंद को सामना करने के लिए तैयार है जाबिर। लगातार 2 गेंद फेंक चुके हैं, डॉट बॉल 2 भी। अब अगली गेंद जाबिर,
शमशीर इस गेंद को कलाम के इस्तेमाल की है, मोड़ ली है जो ऑफ साइड पर, वहां पर जाफर जूनियर थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर डबल अंक पर, और 21 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 21 गेंद बचे हैं, 21 टू गो, 21 टू गेट, बराबरी की मुकाबला जारी है। और इस मैच के विश्लेषता है कि 31 रन को पीछा कर रही हैं यहाँ पर, जब समय है 11:11 हो चुके हैं। अभी भी 3 मैच होना है इस मैच के को मिलकर, जो 3 मैच होना है। इस मैच दूसरी पारी खेलते हुए तीसरी ओर जा रही हैं जाबिर मंजेश्वर। बहुत खूबसूरत मैच है, जो फाइटिंग मैच, रोमांचक मैच है, चकाचक मैच जारी है, और जाबिर बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए 3 गेंद में सिर्फ 1 रन खर्च किया गया, रन संख्या कुल मिलाकर 10 रन। अब अगली गेंद जाबिर के सामने हारिस सुराम भाई लाजवाब बल्लेबाज है, और इनके जो प्रतिभाशाली हैं, इनके जो प्रदर्शन अब तक बढ़िया नहीं रहे थे इस टूर्नामेंट पर, बहुत बढ़िया खेलते हैं कुंबला मैदान में, जो मनंगुजी मैदान में, और निरछाल मैदान में भी बहुत अच्छे खेलते हैं। अब जाबिर अगले गेंद, अरे इस बहुत खूबसूरती के साथ, और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, जो बल्ले पर गेंद आए थे लेकिन जो विकेट कीपर के तरफ गेंद गए। 4 गेंद में 1 रन, एक से बढ़कर एक गेंदबाजी कर रही है। पहली इनिंग्स में भी ऐसे थे, दूसरी इनिंग्स में शुरुआत की है यूसुफ, दूसरी अब अगली गेंद जाबिर, इस गेंद को स्वीप किया गया है, अपील किया जा रही है, लेकिन अपील को इनकार किया है, यानी बल्ले के इशारा किया गया, बल्ले में जो स्वीप किया गया है उस वजह से जो इनकार किया गया। अब आखिरी गेंद में जाबिर, रफ्तार और गति बिल्कुल अच्छे हैं जाबिर की। अब तक 2 रन खर्च किया गया है, 5 गेंदें फेंक चुके हैं, पहली ओवर में 5, दूसरी ओवर में 4, इस ओवर में सिर्फ 2 रन 5 गेंद में। 1 गेंद बचे हैं, क्या कर पाएंगे ये वक्त ही बताएंगे। शमशीर खतरनाक भी हो सकते हैं कभी कभी, ऐसे खिलाड़ी हैं शमशीर, अब तक बिना किसी नुकसान के साथ खेलते हुए, और भी जो बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाज बचे हैं, 10 विकेट अपने पास है। 31 रन को पीछा कर रही है, यहाँ पर तीसरी ओवर के आखिरी गेंद बचे हैं, अभी भी 11 रन, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए। 20 रन की जरूरत है, जो बचे हुए 19 गेंद। अगली गेंद जाबिर, शमशीर इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेक्चर पर गेंद गई है, 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया है, और लेग बाय के इशारा, पहली एक्स्ट्रा यानी लेग बाय के रूप में, रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन, यानी हर ओवर में 4 के प्रतिशत रन बनाए हैं। पहली ओवर में 5 रन खर्च किया गया है, दूसरी ओवर में 4 रन खर्च किया गया है, इस ओवर में भी 4 रन मिला है, लेकिन जाबिर के खाते पर 3 रन मिला है, जाबिर के खाते पर 2, जी हां, जाबिर के खाते पर 2 रन जोड़ा जाएंगे। और अन्नू मनी मुंडाते 1 ओवर में 1 रन दिया गए थे, अब जाबिर 1 ओवर में 2 रन दिया गया है। और आखिरी इनिंग्स में जो ग्लैडिएटर्स ने गेंदबाजी किए थे, तब पहली 3 ओवर में जो केएफसी ने 13 रन बनाए थे, 2 विकेट पतन हुए थे। इस बार 3 ओवर में 12 रन बने हैं, कोई विकेट नहीं। ये विश्लेषता है इस मैच की। अब नए गेंदबाज को लाया गया है,
अलिया का लाजवाब गेंदबाज है, भाग्यशाली भी है गेंदबाजों में, और साइन अप हो चुके हैं। अब 3 ओवर की समाप्त हो चुके हैं, तो जो टॉसिंग के लिए आना होगा अमीगोस यूनाइटेड बीएफसी कैप्टन्स। अब अलिया का पहली गेंद लेकर तैयार है शमशीद पैवलिका के लिए। अलिया का टू शमशीद, बहुत अच्छी गेंद थी, यहां पर खेला गया है, जो शॉट लग गया यानी स्क्वायर लगे इलाके पर गेंद गई, वहां पर फील्डर थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। 18 रन चाहिए 17 गेंद, 17 टू गो, 18 टू गेट। अब अगली गेंद रफी के नाम के अलिया का, अब तक सिर्फ 1 लेग बाई के रूप में अतिरिक्त मिले। अगली गेंद रफीक, ओ हो, बढ़िया गेंद। रफीक भी किसी से कम नहीं है, अलिया का भी किसी से कम नहीं है, गेंदबाजी में बहुत बढ़िया चतुराई दिख रही है। अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है, बहुत अच्छे प्रतिभाशाली है। 11 गेंद सामना किया हरीश ने, 5 रन बनाकर खेल रहे, और इस गेंद में उल्टा बल्ले में खेला जाए, लेकिन गेंद दूर नहीं गए, 30 धारे के अंदर ही पड़े। 1 रन और इस 1 रन के मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 14। अब तक 3 गेंदे फेंक चुके हैं, 15 में 17। अगली गेंद रफी के नाम के अलिया का, अरुण विकेट गेंदबाजी करते हुए इनके सामने है शमशीद, और स्टंप के बिल्कुल बाहर, यहां पर पहली वाइड यहां पर लिखवा देंगे, कुल मिलाकर दूसरी एक्स्ट्रा है। शमशीद बिल्कुल छोड़ दिया गया है। अगली गेंद रफीक, अलिया का इस गेंद में उठाकर खेला है, गेंद सीधा जा रही है सीमारे के बाहर, 6 रन के लिए। यह है शमशीद पैवलिका की सगड़े छक्के। पदिनालिल पत्त वेणम, 14 टू गो, 10 टू गेट। 21 रन हो चुके हैं। हम अलिया का आए हैं पूरी तरह, जो बदलावन हुए, परिवर्तन हुए स्कोर कार्ड में। 4 गेंद में 9 रन खर्च किया गया, 1 वाइड। अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है रफी के नाम के अलिया का, इनके सामने है शमशीद, अराउंड द विकेट, और इस गेंद को कट कर दिया गया है। अब मेरे ख्याल में आत्मविश्वास आए दोनों खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि 13 गेंद बच्चे हैं और 9 रन की जरूरत है। आखिरी मैच में बहुत बढ़िया जो गेंदबाजी किया गए थे चमी वसंगाड़ी और सलाम अरीमला, 9 रन की जरूरत है तब 12 गेंद में, अब 9 रन की जरूरत है 13 गेंद में। अगली गेंद रफीक, और इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया है, लेकिन 1 रन, दूसरी रन के लिए कोई मौका नहीं। यहां पर ओवर की संपन्न हो चुके हैं, 8 रन की जरूरत है, 12 गेंद बचे हैं यहां पर। Amigos on the toss selected to field first. अब गेंदबाजी में वापस आ गए हैं जाबिर मंजेश्वर, 12 गेंद में 8 रन की जरूरत है। अब कुछ आत्मविश्वास है मेरे ख्याल में जो ग्लैडिएटर के तरफ। पहली ओवर में 3 रन नहीं थी, 2 रन दिया गया थे, 1 रन लेग बाई के रूप में थे। अब जाबिर, और इस गेंद में रिसीव किया गया है। अब गेंद बल्ले के ऊपर आ रहे हैं, जो फील्डर भी जो दबाव है फील्डर के ऊपर भी, क्योंकि जो पहली उछालते पहली 2-3 ओवर की समाप्ति पर 12 रन,
बिना किसी नुकसान के साथ खेल रही है। जी हाँ, ये तो ख्याल नहीं किए, बिना किसी नुकसान के साथ खेलते हुए 10 विकेट अभी भी अपने पास बचे हैं। और विकेट बिल्कुल बचाना जरूरी भी है, जो आखिरी दम तक जो काउंटिंग करते हैं तब नॉकआउट में प्रवेश करने के लिए जो यहां पर विकेट के काउंट किया जाएंगे। सुपर सेमी के लिए कोशिश कर रहा होगा, यहां पर विकेट, बोले तब विकेट। मेरे ख्याल में तो प्रदीप कुंबला ने मेरी बात सुना होगा, जब विकेट तो पतन हुए। अब रियाज कुंजतूर आए हैं बल्लेबाज के रूप में। 8 रन और भी चाहिए मैच को जीतने के लिए, जो 11 गेंद बचे हैं। अब अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है जाबिर। 7 रन की जरूरत, क्षमा कीजिए, 7 रन जो बचे हुए हैं। 10 गेंद बचे हैं, जी हाँ 10 गेंद बचे हैं, 7 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। और अब अगली गेंद जाबिर, और रियाज ने गेंद हवा पर है लेकिन फील्डर पहुंच नहीं पाए। हवा पर थी गेंद, फील्डर ने जो कैच के लिए कोशिश नहीं की, फील्डिंग के लिए कोशिश की, तब 7 रन की जरूरत, 6 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, जो बचे हुए 9 गेंद में। 3 गेंद बचे हैं जाबिर के। जाबिर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अब अगली गेंद जाबिर टू हारिस। 1 विकेट पतन हुए जरूर, अब 6 रन की जरूरत है, कोई समस्या नहीं, कोई बढ़िया रन की जरूरत नहीं। यहाँ पर 9 गेंद भी बचे हैं, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कह नहीं सकते। और इस गेंद बहुत बढ़िया यहाँ पर, और इसी के साथ हारिस सुरम बाहल आउट। अशरू पिछू बॉयस आए हैं, जाबिर गेंदबाजी करते हैं। अशरू पिछू बॉयस बहुत अच्छी पारी खेले थे आखिरी मैच में, लेकिन मैच नुकसान हुए थे। 8 गेंदों में 6 रन। जाबिर अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। लगातार दूसरी विकेट इन्होंने हासिल किया इस ओवर में। अगली गेंद जाबिर, और इस गेंद में उल्टा बल्ले में खेला गया है, बहुत खूबसूरत रन। यहां पर वाइड के इशारा दिया जा रही है, 4 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। वाइड के इशारा, बाय और वाइड। और मैच के लिए वापस जाना होगा, यहां देखकर कुछ फायदा नहीं, जो अंपायर के जो निर्णय अंतिम निर्णय होगा। 27।
മത്സരം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ടൂർണമെന്റിന് കളങ്കം ചാർത്താത്ത രീതിയിൽ നേരത്തെ തന്നെ വാൺ ചെയ്തതാണ്. അമ്പയറുടെ തീരുമാനം ഏതാണോ അത് അംഗീകരിച്ച് കളിക്കണം. ഇവിടെ സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവേണ്ടതുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് ക്യാപ്റ്റൻ തികച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി 3 മത്സരങ്ങൾ കൂടി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റന് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ഉള്ളത്. അതും ആർഗ്യുമെന്റ്സിനുള്ള അവകാശമില്ല. और गेंदबाजी के लिए तैयार होना चाहिए. अब सिर्फ 4 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने. 8 गेंदों में अब जाबिर अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार है. जाबिर के सामने है रियाज कुज्जतू. आठ में 4 रन की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए. अगली गेंद लेकर तैयार है जाबिर. बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं. अब अगली गेंद जाबिर टू रियाज. और इस रियाज ने इस गेंद को खेला गया गली इलाके पर. गेंद को तेजी के साथ उड़ाए तब तक 1 रन. और अब 3 रन की समस्या है इस मैच को जीतने के लिए. 7 गेंद बचे हैं इस ओवर में. 1 गेंद बचे हैं. अगली गेंद लेकर तैयार है जाबिर. जाबिर टू अजरू. लेग स्टंप के काफी बाहर. यहां पर फील्डर मौजूद थी और इसी के साथ वाइड. और 1. मैच विल बी टाइड अप. अब सिर्फ 1 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए. यहां पर जाबिर गेंदबाज है. 7 गेंद बचे हैं. 1 रन की जरूरत है. और इस बीच बहुत खूबसूरत शॉट. 1 ही रन. और गेंद जा रही है सीमारे के करीब. रोके हैं. 1 रन दौड़कर पूरा किए. और इसी के साथ ग्लैडिएटर्स ने आसानी के साथ इस मैच को जीत लिया गया. अगले मैच के लिए जाना होगा BFC और अमिगोस यूनाइटेड के बीच में. और मैन ऑफ द मैच की तरफ जाना होगा. और मैन ऑफ द मैच के लिए അടുത്ത മത്സരത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. അമിഗോസ് യുണൈറ്റഡ് ആണ് ടോസ് കരസ്ഥമാക്കിയതെന്ന് അറിയുന്നു. ഫീൽഡിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിലേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട്. നൗഷാദ്.
മഷൂദ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിൽ അതോടൊപ്പം നൗഷാദ് ബുറാക്കും ചേരുന്നു. Okay, thank you, Abdurrahman BSC Beko. Now it's time to announce the man of the match for the previous match. Here we have Mashud PAIVALIKE ready. And over the man of the match, and it goes to the left-hand bowler, Shamsid PAIVALIKE from Andram Gladiators. Please come here to collect the man of the match award. Here we have the chief guest, Mr. Mashud, who is ready to hand over the man of the match. Shamsid PAIVALIKE, the left-hand player from side of CSC PAIVALIKE, playing for Andram Gladiators. Please be here on the presentation area for collecting the man of the match award. So Mashud PAIVALIKE endeavoring the man of the match award for the player like Shamsid PAIVALIKE, the left-arm star from CSC PAIVALIKE, playing for Andram Gladiators and having 2 liters soft drink sponsored by Andram World Group. Thank you, Mashud, and congratulations. Shamsid, over to the commentary box. Thank you, Nusha. Amigos United ने टॉस जीता है, जो फील्डिंग करने की इरादा भी किया है. सारे खिलाड़ियों मैदान पर जारी है और ओपनिंग खिलाड़ी जो BFC की तरफ से बदरुद्दीन और सतीश मुजिंगा दोनों तैयार हैं. और इस बीच में So okay, we are ready. So thank you, Abdurrahman BSC Beko. Once again, match playing between Amigos United takes on BFC Meshwa. So Badru Pasur, Satish Kumbala, both the right-handed batsmen opening for BFC Meshwa. In the bowling card, we can see Praveen Manglo started with a good delivery towards the leg stick region. Batsman flicks the ball into the leg side region and running for the single with a beautiful single. Badru Pasur opens his card and the team card here. So Praveen Manglo ready to deliver the second one over the wicket to the right-handed batsman Satish Mujingao. This full deliver, looking for the reverse shot. Shot was not perfect. Shot selection was perfect from the batsman, but connection was not perfect. Ball moving into the keeper bowler's region. Here comes Praveen again. One pitch deliver, this time ball moving towards the electric region. That is the wide night exercise for Udaya MCC. In the umpiring panel, we can see the senior most umpire Udaya MCC and Latif PAIVALIKE doing the job as the official umpires for the particular match. This time Satish Mujinga pushing the ball into the onside region into the hands of Nasir Arimala, and he opens his innings in the particular match. After completion of 3 balls, scorecard is 3 without loss of the wicket. Here comes Praveen again. So this time Badru was trying for a scoop shot behind the wicket. This time ball missing, ball moving towards the outside region. Excellent bowling performance. Here comes again. Another full delivery. We can find the ball is going that one bounce and full delivery from the bowler Praveen, but that was the fastest delivery. Batsman was not able to focus the particular ball coming from Praveen. This time pitching one nicely delivered, and that was a good line. Over number 1 completed here. First over completed. So okay, finally first over completed here. Scorecard is 3 without loss of wicket. So 2 singles and 4 dot balls we can find in the bowling card of Praveen Manglo. Excellent bowling performance from the icon player from side of Amigos United. They are playing against BFC Meshwa, who only got 2 points on the points table. The batting team BFC Meshwa
Really disappointment we can see in the face of the captain Badru Posod. He was trying his level best to put the team on the winning side, but they lost all the 4 matches so far from the 5 games. Only a single victory we can see from BFC Manjeshwar. They are entering into the ground to play the final game. After the completion of the very first over, Captain Uni Krishnan comes in the middle to bowl the second over. Here comes over number 2. And strikes Warrior. This time that sounded perfectly and into the hands of the fielder. There was a well-protected Samat Talekala, makes no mistake in the deep. That makes the end of the wicket number 1. Satish Mujinga, who was struggling out of form, still continuing for BFC Manjeshwar. That is the big headache we can see for BFC Manjeshwar. The icon player was not at all performing good for the team, and finally is walking back to the dugout in the final match of BFC Manjeshwar in the group stages. So a good start we can see from the bowler Unni Krishnan Kumbala coming into the attack after the perfect over of Praveen Manglo. Unni Krishnan comes in the bowling mark, delivers towards electric region. Satish Kumbala flicks the ball. There was the well-protected Samat Talekala. This time Badru just drives, that goes like a rocket, but we can find again Samat Talekala there. Unni Krishnan setting his fielder perfectly for the power play overs to restrict the boundaries into the square leg region, deep region. We can find the fielder Samat Talekala starting to get the ball from the big gaps. We can find 3 fielders are allowed outside the 30-yard circle. There is a power play over on a progress here. Now Unni Krishnan with the ball number 3. Jafar Makulam this time bails a lightning. Wicket number 2 down. Losing wicket still continuing for BFC Manjeshwar. Badru, the captain, is standing at other end. Now Jafar Makulam, the big man, walking back to the pavilion in the form of clean bowl. That is the second wicket for Unni Krishnan Kumbala from his 3 balls. After losing the wicket of Jafar Mekulam, here we can find the new batsman Dinesh Mandior. Louder appeal from the bowler. This time he fails to collect anyway. Dinesh Mandior just completing single. Umpire indicates 1 in the form of leg bye. That was a confidential, something confident we can see from the bowler for that appeal, but umpire says batsman was away from the stake. 4 balls completed. Excellent bowling performance. Here comes the ball number 5. Pitching delivery this time, similar kind of shot from the batsman Badru. Excellent collection, little fumble. Batsman is just satisfying with a single. Badru Posod was not going for the couple of runs, just 6 runs on the board after completion of 1.5 overs. Excellent bowling figure we can see from both the bowlers. Praveen Manglo just considered 3 runs. Unni Krishnan Kumbala considered 3 runs. Here comes the final one. This time completely missed into the foot of the keeper. Over number 2 comfortably completed. That was a good power play over for the fielding side. Just 6 runs for the loss of 2 wickets. So 2 overs completed in the bowling mark. We can find the new bowler Siddiq Perla ready to deliver the 3rd over. Excellent 2 overs we can see in the bowling card from Amigos United. Praveen Manglo, Unni Krishnan Kumbala now changing the wicket keeper. We can see finally the regular wicket keeper Unni moving into the keeping position. Siddiq Perla ready to deliver the 3rd over. Nicely delivered this time, ball moving far away from the leg streak, and they are looking for the run, and umpire just moving, and batsman is crossing on the single. That was a wrong throw coming from the fielder behind the wicket keeper. Umpire widens both, and that is the extra +2. Wide given by the bowler Siddiq Perla. Extra run given by Ashik Manjeshwar, the fielder behind the wicket keeper. 2 runs gifted by both the players. Here comes Siddiq again. Rolling delivery, nicely delivered. This time umpire said that was illegal. Line was perfect from the bowler. Siddiq Perla
started with a mistake. We can see white +1 to start the over number 3. Finally gets the good line on the track in front of Dinesh Bandiod against Siddiq Perla. Something pitching nicely played this time up in the air. One bounce into the answer. Satta Balipada was standing at the long off region. So with a beautiful single, Dinesh Bandiod finally opens his innings. He faced 4 deliveries so far, 3 dot balls and 1 singles. Now 2 balls completed from the bowler like Siddiq Perla. Excellent bowling performance we can see from the team like Amigos United. Here comes Siddiq again. Rolling delivery nicely played. Again ball moving into the long off region. Long on fielder Samad comes and collects throws into the bowler's region. Batsman just satisfying with single. That single makes scorecard double digit 10 on the board. So 4 balls completed here. Excellent bowling performance. Still we can see from the bowler Siddiq Perla. Here comes the ball number 5 to Dinesh Bandiod looking for the scoop shot. Beautifully done by the batsman. This time fielder rushing towards the boundary region, but ball says bye fielder. I'm going to the boundary rope, and that is a beautiful one. 5 balls completed. Scorecard is jumping to 14 runs on the board. Excellent shot from the batsman. We can see Dinesh Bandiod seeing that pitching delivery, just taking the advantage and giving a slight scoop with the bat ball moving into the deep region. Samat Alekala was tried his level best to get the ball, but ball flying to the boundary region. 5 balls completed. Here comes Siddiq again. Pitching one this time nicely played into the covers region. Fielder makes no mistake. Over number 3 completed for the batting side. Now scorecard is moving to 15 runs for the loss of 2 wickets. So Unnikrishna Kumbala ready to deliver the 4th over. This time nicely drives into the covers region. Excellent collection we can see from the fielder inside the 30-yard circle, allowing batsman just to go for the single. Here comes Unnikrishna again. Completely missed. A big appeal going from the bowler. Keeper was not confident. Praveen was just looking for the ball. Umpire indicates 1 in the form of leg buys. 2 consecutive singles taken up here. 1 in the form of leg buys. We can see Badru was just looking for the big shot, but ball heading the pads and moving into the 3rd man position. This time confident. Umpire raising the finger. So Latif PAIVALIKE was moving from the umpire's region and just raising the finger. That was a late call. Finally good decision. We can say Dinesh Bandiod walking back to the pavilion. Batsman was striking in front of the wicket. Wicket number 3 down. 3 balls completed. Scorecard remains on 17 runs on the board. So we can see the bowling card of Amigos United. Praveen Mangalore started the very first over, considered 3 runs. Unnikrishna Kumbala considered 3 runs, 2nd over. Siddiq Perla bowled the 3rd over. We seen the boundary. That was something expensive from the bowler so far. And Unnikrishna bowling the 4th over. Bowled 3 delivery perfectly this time towards the off-side region for the left-hand batsman. Semid is the man batting at number 5, right-hand batsman. Semid is the batsman who come at number 5. Here comes Unnikrishna again. Nicely played. Drives into the long off region. Again into the answer. Satta Belipado miscollection. Slippy hands from the fielder in the deep. Meanwhile, batsman converting into the single into the couple. 2 more runs added up here. There 2 make scorecard 19. 4 balls completed. Just a single boundary. We can see match is moving into the 4th innings. Still the captain Badru is standing at other end. This time looks a scoop shot. Sweep shot. Nicely done by the batsman Samat Alekala. Maybe the fielder there. Meanwhile,
batting side gets a comfortable single. 5 balls completed, still one more delivery yet to come from the bowler Unikrishna Kumbala. Four overs completed. Your captain brings the young bowler, young Trent from Pachilambara. Farooq Reliance Kuntapuni ready to deliver the 5th over, taking the guard right time around the wicket from umpire to the right hand batsman Shamid. Nicely saves this time. Ball moving in his final leg region. Ashik is rushing towards the ball and fumble. Meanwhile, batsman going for the second run. Excellent thinking weekend. The presence of mind of the fielder like Ashik Manjesh. Soon after seeing the batsman turning the bat, he was moving little wider but fails to collect the ball in the right time. That makes the batsman to cross with a couple of runs. Here over number 5 started with a couple. Here comes Farooq Reliance Kuntapuni ready to deliver the second one. This time Rivasi clearly done. One more single taken. The single makes a team total 23 runs on the board. So losing the wicket, that is a big problem for BFC Manjeshu in the entire tournament. We can see in the Swiss Premier League 2018, Captain Badru Posot is playing well at the other end, but he can't get a good partner. And this time, clean run out from the field. Badru Posot was calling for the single. Umpire widens both, and that is the extra delivery. There was no chance for any runs. Badru was calling for the single. Shamid responded negatively. Finally, the one-man army walks back to the pavilion in the form of run out. After completion of 4.2 overs, scorecard is 24 runs for the loss of 3 wickets. So 4 wicket down for the team like BFC Manjesh. Soon after losing the 4th wicket, here we can find the new batsman Ashik Osingadi batting at number 6, who is playing the final tournament in the particular season. Is planning to fly abroad after this particular Swiss Premier League. Here comes Farooq. Nicely played, drives into the offside region. Well, collection we can see from the field with the jersey number 10. Apu Pollam is a fielder standing in the offside region. So far he's doing great job with the fielding position. One more single taken up here. Here comes Farooq again. Lucy this time hitting the pads and ball moving to the keeper's region. That was pitching delivery, but batsman fails to contact ball with the bat. There was no big story between cricket bat and cricket ball here. 4 balls completed. The excellent bowling performance we can see from the bowler like Farooq Reliance Kuntapuni in the entire Premier League, entire tournament. Nicely played, this time lifting towards the widest long off region. Sattar Billipada very much rushing for the ball, and that makes batsman to satisfy with single. With the help of that single scorecard, team total is moving to 26 runs on the board. 5 balls completed. So far we can see single boundary in the innings of BFC Manjeshu. Dinesh Bandyod who scored the boundary. This time bells are lightning. That is another wicket down for BFC Manjeshu. Over number 5 comfortably completed for the fielding side now. Scorecard remains on 26 runs for the loss of 5 wickets. So 5 overs completed, scorecard is 26 runs for the loss of 5 wicket. New batsman moving into the crease. It's Moidu Chergoli. The left-handed batsman is coming down the order. We can see batting at number 7.
Nasir Arimala is ready to deliver the sixth over. We can see the team like Amigos United was really struggling in the day number 1 in the PAIVALIKE Stadium. They lost all the 3 matches, but entire change we can see from Amigos United. They lost 2 matches in the day number 1, and in the particular day number 3 they lose the match against Andram Gladiator. That was the welcome match of the day number 3 in the Swiss Premier League. Soon after 3 loss, Krishna had a big chat with each and every players and bringing some new techniques for their team. Finally, they played against Extreme Hunters. More than that was a powerful, energetic performance we can see from Amigos United. They scored 82 runs from limited 6 over. Krishna Kumbala scored 41 runs. Excellent batting performance we seen from Samat Talakala, who scored more than 20 runs for his team. That made something energy back to Amigos United for this particular Swiss Premier League, and they got a victory against CSC PAIVALIKE. Back-to-back victory we can see from Amigos United. Now they are playing the final game against BFC Meshwa. Now the match is well under control of fielding side. 29 runs, 6th over in progress, 5 wicket down for BFC Meshwa. 28 runs on the board. Here comes Nasir Arimala. They start looking at the big shot, and Shami is calling for the single. Krishnan is not looking for directed there. There was no backup field. Excellent thinking by the captain. Don't want to allow the extra runs. He knows the value of each and every runs in the cricket match. Here 3 balls completed from the bowler. Here comes the ball number 4. This time bowling towards the electric region. Ashik Meshwa very much quick to collect and not looking for any chance for the run out. Just keeping the ball in the hands. Meanwhile, batsman completed the single. White ball plus by. That is extra 2 runs gifted by the bowler as well as the wicket keeper. 30 runs already on the team total. 3 balls completed. Here comes the ball number 4. Lucy one. Moidu Chargol is striking the very this time. Fielder puts the hands on. Excellent work in the deep. I think it's Farooq Kuntupuni standing in the deep region. So 31 runs on the board. Here comes Nasir Arimala again to semi. Nicely played. Drives into the mid-wicket region. Imran comes and collects. Meanwhile, batsman completes another single. 5 balls completed here. 32 runs on the board. Low scoring total we can see from the batting side. BFC Meshwa. They came 1 more to go. With the attacking openers Badru and Satish Mujinga. So Satish form out, that is making something trouble for the team like BFC Meshwa. Captain may be very much confident of the player like Satish Mujinga. Each and every player in the Andram cricket knows how attacking star Satish Mujinga is. But still he was struggling entire Swiss Premier League. He was struggling here. That made something problem for BFC Meshwa. They got just 2 points on the points table after playing the 5 matches. They are playing the final game. Let's wait. Can they get a victory here against Amigos United? 5 balls completed here. Bowler bowling. Another extra. Nasir Arimala. Scorecard is jumping to 35 runs on the board. Here comes the final one. Rolling delivery, looking at the big shot. This time ball moving into the deep square like region. Siddiq Perla makes no mistake. Meanwhile, batsman is looking for the couple of runs, and keeper breaks the stamp. That is the 1 more wicket down. Innings number 1 comes to an end. Scorecard is 36 runs for the loss of 6 wickets. That is the match summary, innings summary of the team like BFC Meshwa. 37 will be the victory target for Amigos United. Let's wait who will open for Amigos United in reply of 37 runs. And let's wait who will be the 6 bowlers for BFC Meshwa in the final match. Both the teams playing. So Amigos United as well as BFC Meshwa playing their final game in the group stages. So far we can't get any teams which is qualified for the upcoming round, which is eliminated from Swiss Premier League. A tight pool we can see. A tight teams. There's 14 teams tournament going on here. 7 teams battling in the pool A. So far no teams are eliminated from this particular tournament. The result of this particular match will give the team which is eliminating from this tournament. Upcoming match we are having Munna Fighters PAIVALIKE, CSC PAIVALIKE. So both the teams from PAIVALIKE playing face to face in the Swiss Premier League for the first time. I request all the players on side of Munna Fighters PAIVALIKE, CSC PAIVALIKE, please finish your sign up process immediately for the match number 10.
ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന സംഘാടകർ